Hello students, welcome you in classroom. Just before watching my next video, you should share and subscribe my channels and press I icon to receive latest notifications. As you know, it is a class of 12th BSc board and I am going to teach you a poetry titled The Soldier. The poetry is composed by Robert Brooke. He was a well-known war poet and the poem is a sonnet which is full of patriotism. Here the poet expresses his feelings on his country. He is a young warrior and took active participation in the World War. Even the poet was a soldier, but he dislikes quarreling. The poet thinks that he is one of the most handsome young of England. He is a soldier and goes in war. He thinks or wishes when he dies he must be placed in a corner of the field in England because he belongs to England. If he dies in foreign and his body is buried there, but it would be also the place of England. He thinks so because his body of England is there and praises England and everything of England. He says that his country has given him birth, made him matured and given love, rivers to wash, ways to move, blessings of the sun and fresh air to breathe. It is. He wants that there should be beat and he likes to live in a peaceful country like England. He doesn't like the war between two countries. He thinks if there is no war in England or in any other country, then it will be like the heaven. He is proud of England like other soldiers felt or feel patriotism to their countries. He is proud of England and the gentleness of his countrymen. So we can say that the poet expresses his great love and patriotism for his country. In this way, we may conclude that the poetry is full of patriotism. अभी तक मैंने आपको पढ़ाया सोल्जर पोइट्री. इसमें पोइट एक सोल्जर है, फिर भी डिसलाइक करता है वार को. पोइट का पर्सनल विश है कि वो अगर डेथ करे तो सिर्फ अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए, क्योंकि इस कंट्री ने उसे जन्म दिया, इस कंट्री के रास्ते पे वो चला, इस कंट्री के एयर में वो सांस लेकर के बड़ा हुआ. वो अपने आप को अपने देश का सबसे ज़्यादा हैंडसम यंग वॉरियर समझता है. मतलब इस पोइट्री में पोएट रॉबर्ट ब्रूक अपने देश के प्रति देशभक्ति को बतलाता है. ये पोइट्री आपको BSc क्लास 12 का 100 नंबर इंग्लिश से पूछेगा, जो इम्पोर्टेंट पोइट्री है, और इसमें आपको 5 मार्क्स के समरी ही पूछते हैं. तो मैंने समरी कहा और आप बार बार मेरे कहे समरी को सुन करके रिपीट देख करके, है ना, आप पोइट्री का समरी राइट डाउन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको नए टिप्स के साथ हाजिर होऊंगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, और बेल आइकन जरूर दबा दें. और कोई ग्रीवांसेस हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे पहले वीडियो में आपको मालूम है व्हाट्सएप नंबर, उसमें अपना पर्सनल क्वेश्चन राइट कर सकते हैं. थैंक यू.